Hello. Welcome back. Welcome to my channel, guys. आज uh, कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक तो आई couldn't फाइंड क्योंकि आई थिंक 6 p.m. को देर इज अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आई थिंक नहीं श्योर बिकॉज ऑफ दैट मे बी देर इज नो ऐसे a good movement in the market which currently I am waiting for that, and we'll see how things can turn out to be. First, hmm, what we can see now. Damn, damn, हनुमान काइंड ऐसे तो सुनना नहीं चाहिए बट रिसेंटली मैं क्या बोलते हैं शॉर्ट अपलोड कर रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम आई लिसन द सॉन्ग इट्स क्वाइट गुड I love the lyrics of that particular song. जस्ट अ सेकेंड आते ही तुरंत सब कुछ नहीं बोल देना चाहिए आई फील मुझे अभी समझ में आया कि धीरे धीरे लाइव स्ट्रीम लोगों तक पहुंचता है और स्टार्ट स्लो स्लो सब ऐड होते जाते हैं तो बेटर है कि डायरेक्टली मैं कोई इम्पोर्टेंट बातें ना कर दूँ जब नो बडी वॉज ऑनलाइन आई नो मेरे वीडियोस अपलोड होने के बाद ज़्यादातर देखे जा रहे हैं but फिर भी it's okay. तो वो हम अभी एनालाइज करते हैं कि मॉर्निंग से मैं पहले तो आउटलुक में जाता हूँ अपने जो भी मैं डिस्कॉर्ड पर अपलोड करता हूँ वो यहाँ पर अवेलेबल होता है टुडे इज़ अ बैड डे टू ट्रेड जीबीपी जीपीवाई बिकॉज जेपीवाई बैंक हॉलीडे एंड जीबीपी हाँ जेपीवाई में बैंक हॉलीडे है जीबीपी टू मैनी न्यूज़ ऑन यूएस न्यूज़ on USD there is a 6 p.m. unemployment claim news. Okay, so it is a very high impact news. So that's why I was pretty much slow down today. I only to go for higher probability trades only. That's why I'm not taking any trade during the London session. And this is my daily bias. When I was when I'm in the trade, I mean I open the chart for Outlook. I see this uh, at before this fractal break. I will not confirm that daily swing pullback is occurred. I mean it started. I will not conclude that. There is no sign yet that daily swing pullback is started. जब तक ये fractal break नहीं होगा, there is no sign for me.
एंड फिर हम H4 में आते हैं उस वक्त। ये सारी चीज़ें मैं अपने डिस्कॉर्ड पर, प्लीज़ कम ज्वाइन मी अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, that you guys miss so much things and you might miss so much things that will come in the future. ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड। whatever I am telling you, I always upload these things on my discords, as you can go to my discord group। यहाँ पर आउटलुक्स होते हैं यूरो यूएसडी के एंड जीबीपी जेपीवाई के। जो भी मैं पर्सनली ट्रेड्स देख रहा हूँ या फिर आई एम लुकिंग समथिंग, उस टाइम पर ये चीज़ें वहाँ पर मैं लिख के डालता हूँ। एच टी एफ स्विंग इज बुलिश, इंटरनल इज ऑल्सो बुलिश, till this strong internal break I will not consider that swing pullback started। okay, और डेली में भी यही हो रहा है। some people can call this as their swing structure as well, because swing structure short हो या फिर टाइट हो या फिर ज़्यादा ब्रॉड हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम एंड अप अगर ट्रेड लेंगे तो दी बोथ, मतलब अगर किसी का टाइट स्विंग स्ट्रक्चर है और किसी का वाइड स्विंग स्ट्रक्चर है, तो अगर ट्रेड लेंगे तो सेम आइडिया में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो देर इज़ नथिंग, but I am thinking from next week onwards I can convert this as my swing. Why not today? Why not this week? Because simple, what I was looking at throughout this whole week is my, मतलब मैं उसे पूरी तरह से इस हफ्ते में देख रहा हूँ सेम चीज़ को, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी आईज से डिस्टॉर्ट हो गए। मतलब मुझे अगर पता है एक बार मैं आईज ओपन हुआ, मैंने चार्ट देखा, तो आई कंफर्म दैट हाँ ये ऐसा है, नथिंग हैज चेंज। बट इफ आई एम चेंज दिस ड्यूरिंग दिस वीक ऑनवर्ड्स, इट माइट बी इफेक्ट मी to see clearly bias. So that's why I did not change it, but might be I will change next week onwards। okay, तो ये है एक चीज़। तो ये एक चीज़ हो सकती है, बट विल सी। ये डेली H4 का था। उसके बाद व्हेन आई गो टुवर्ड्स द M15 swing is bullish, internally is bearish, it's coming to the discounted zone where price can reverse। okay, but till the internal structure bullish confirm happen, we not take the long trade till internal order flow switch bearish, switch bullish। Here is the Asia above well, so we move more cautious here। मैं during London session बोल रहा था, but क्या हुआ, throughout the London session price did not come up till here, it just melt down and ranging around here। अगर आप अभी देख रहे हो, it did not pull back till up here. It just melt down, break of structure, did internal break of structure to the downside, and it's come to the extreme POI of the swing range। There is no other POI after that। So I've I have to follow our order flow of the swing structure, and currently have to follow the internal order flow max to max. I have to follow the internal order flow, because if I'm not do that, it might be a wrong entry for me if I'm taking it. So that's why I just patiently waiting uh, for price. M15 give me my bias. I'm just patiently waiting for that to happen, then and only I will take the trade। but as you observe totally on H4, अगर आप H4 में देखोगे, इफ यू गो टूवर्ड्स द H4, ये लास्ट है, जैसे कि M15 में भी वो लास्ट है, तो ये H4 के अकॉर्डिंग इंटरनली भी ये लास्ट है। तो इट शुड होल्ड दिस इफ price wants to go upside, because there is a daily demand supply zone which has not mitigated yet। There is still four and a five, I mean almost
4.5 pip gap is there. Okay, so there is high probability that might be price use this as an inducement, tap on this and then can come down. We don't know about it because it just swept this high and did not mitigate any uh, above POI and just coming down very aggressively. Okay, so I'm just wanted to see if swings internal not break this strong. I'm still looking for a long opportunity if M15 internal align with my overall bias like this. If this fractal break happen, I've that means new POI has been created. But as you know, current order flow is internally bearish. Okay, so there is a high chance that market come up till here and just melt down. So it is against the momentum that I'm trying to take the entry if price give me before the news. I think it will not give us the before the news because the news around 6 p.m. Just a second, I have to see. First, I have to go to my Notion dashboard and then uh, the news around 6 p.m. Okay, so I don't think I'm going to enter till 6:15 p.m. Any trade I will not take the entry. 6:15 I will just wait and patiently wait, not going to take any kind of a bad setup at all. So then just waiting for market shift in my favor. Just a factoral break is a sign of an internal pullback. It's not a sign of a swing pullback. Okay, so internal pullback can occur and there is no imbalances here. So I can look up to target this high and to this might be. But keep in mind that overall current order flow is bearish. So I need high, high, high. Hi Flimboy, welcome. So I just keep in mind that I have to be very aggressive on this trade because it will be phase B to me. Phase B कौन सा होगा? This I show you. It will be phase B. So it will be phase B. So I will target till up here, not assuming that it will break the internal strong till it break. So ये जब तक break नहीं होगा, I will not be. So क्या करूँगा after fractal break? If there is new POI form here, I will take the entry. But when price reach to the some point where I supposed to do break even, I do that because anytime soon if this strong hold price might just come down. So that's why I'm telling that here if I'm looking to long, I have to see this fractal break and new POI is created. In this POI it has to be inducement inside that. जल्दी देख लो, क्या लिखा है? मैं गाँव में हूँ, मेरा पास नेट कम है, जल्दी देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, बाय बाय बाय। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कम बैक जब आओ तो देखेंगे। ओला, ओला यार क्या है, तो यार ओला लिखता है। सो यहाँ पर जो भी पीओआई अवेलेबल होगा, अगर उसमें इंड्यूसमेंट होगा तो आई विल लुक टू टारगेट अप टिल हियर और टू दिस। बट back in my mind I have to be very strong with my break evens because overall scenario is looking bearish. H4 is telling us that anytime the swing pullback can kick in. So I'm just waiting for price to give me any kind of shift in my favor, then I will take the entry.
It will be aggressive one. I'm not uh, telling you guys to take that, but इसे भी स्टडी करो आप, अगेंस्ट द मोमेंटम कैसे ट्रेड किया जाता है. बाय फिल्म बॉय, बाय. टेक केयर ब्रो, टेक केयर. And let's talk about GBP JPY. Okay, I give you the scenario. I mean, I posted GBP JPY as well, but what I written here is that is important. Too many news on GBP, plus there is a JPY bank holiday, so I will be more patient on this pair today. मैं यहाँ बहुत पेशेंसली देखूंगा. मैं यहाँ कुछ भी ऐसे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे नहीं जाऊंगा, और मैं वेट करूंगा. अगर इफ आई एम सपोज टू टेक एन एंट्री, आई विल वेट for I will see the news. If there is a news around less than 1 hour, I will not take that entry because it's a swing strategy. It will go up, run till 5 to 6 hours. So I will not go uh, go with this pair very thoroughly or very strongly today. So I will be patient. So what I was looking at, if you see the H4 that time, this this POI is too big. Okay, but if price coming down very strongly till up here, then this is invalidated to me. But suppose from here onward, if it's come up, then I will take the entry to the short. Okay, so that is the whole idea of GBP JPY trade today. यूरो यूएसडी में जस्ट वेट. मार्केट इतना वॉलेटाइल है, एक ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाया. यस यस, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है. स्टिल आई एम नॉट कैप्चर एनी ट्रेड, बट yesterday आई गॉट इट ऑन जीबीपी जेपीवाई. जैसा कि मैंने डिस्कोर्ट में शायद पोस्ट भी किया था. नो दैट. Just a second. On EU, I take the loss, and GBP JPY I take a. This was the trade that I posted, 753. On M5, I have taken it. Uh, yes, a little bit volatile. No, yes, लिया था. 3 months I was there, and after that, there are lots of clone going on. So I take advantage from there, but I'm planning to join them again for at least for 1 year. But let's hope, because they have something new to offer. So that's why I'm waiting. And then what happened? See, it did not come up till here. It just melted down, but now it's showing a sign that it's pulling back to this POI. So if it does that, then there is two POI for me to take an entry. Extreme is always best. And initially, if the price is very aggressive and the POI is too big, so sometimes this can also happen. It just come up like this and just melt down, and most of the time it not did not do that and just come up, take out. Everybody wants to, who wants to take an entry here, and just go down. So it might be I can take two trades, but let's wait. So this is the H1 POI that I was currently uh, waiting on GBP JPY. And let's go to EU. Anyone talking about EU के बारे में क्या पूछ रहा हूँ? तो मार्केट में कहाँ वॉलेटिलिटी. अच्छा, EU का. यस, महंगा तो काफ़ी है, बट मैंने लिया था. एंड आई हैव लर्न मोर देन इनफ. आई मीन, इतना सीख चुका हूँ about their strategy and about ICT कि I'm planning to introduce my own strategy. मैं उसको कुछ भी कॉल कर सकता हूँ, नाइट मैन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. एक मेडिकल डिग्री से बहुत सस्ता है. बात तो सही है. बात तो सही है. बहुत सही बात है. बट आपको उस मेडिकल डिग्री से ज़्यादा देगा कमा के, अगर आपने उसे मास्टर कर लिया. आई मीन, आप खुद के क्या बोलते हैं, फ्रीडम आ जाता है. दैट इज़ द थिंग.
कमाने की बात नहीं, कमाना तो आपको कहीं से भी इंसान कमा लेता है। छोटा सा समोसे का स्टॉल डाल के भी आदमी कमा लेता है आज के ज़माने में। अगर एग्जांपल है, मुंबई में बहुत फेमस समोसा का गुरु कृपा है, वो बहुत फेमस है, तो समोसे से इतना कमा लेता है। ये बात सिर्फ इतनी है कि फ्रीडम की बात है। ट्रेडिंग एक फ्रीडम देता है आपको कि आप अपने हिसाब से लाइफ में चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, ना कि अपने जॉब की प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है ट्रेडिंग की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कि ये जो मेरा मार्कअप है, ये वाला, ये है मेरा पीओआई सिलेक्शन का मतलब। if I wanted to take sell, I will not take sell from here. It's around here, it's a premium and discount, nothing else। पुश कर सकते हो ऊपर, 100%। एकदम सही बोला, एकदम सही। देयर इज नो कैप, उसमें तो बिल्कुल नहीं। स्काई इज द लिमिट, सिंपल इज दैट, स्काई इज द लिमिट। जितना आप पुश कर सकते हो टू योर सेल्फ, वही बेटर है, मतलब वो बेस्ट है। फ्लाई टू द मून, फ्लाई टू द मार्स, यार मून तो जा चुके हैं लोग, अब फ्लाई टू द मार्स करने का। मून लोग जा चुके हैं। 6 PM को न्यूज़ है ना, इसलिए स्किल्ड हूँ। स्किल्स, देखो मैं इतना बोलूंगा, जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड में, जैसे लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट सीएस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल, वो चीज़ को आपको रखना पड़ेगा साइड में। नेवर disrespect your uh, main, what I say, main job। नेवर disrespect that, बिकॉज वो है जो आपको बैकबोन में तैयार करता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट दैट। उसके बाद आप कुछ भी करो यार, एक चीज़ में मास्टर कर लो, उसके बाद यू कैन डू दैट। थोड़ा सा बोरिंग है ना आज की ट्रेडिंग। अलग बोले तो एक सिंपल सी चीज थी। आ, मतलब बिफोर आई वाज लाइक I was not sure about market structure and everything. I was just like impatient and doing strategy hopping most of the time. But when I found out about that, पता नहीं किसने फोन किया है अभी, I'm not able to receive it right now because my iPhone is a camera that I'm using. So हाँ, जॉब करके फंड जमा करना है, राइट, वेल सेड। सो इट्स जस्ट दैट आई लव द अप्रोच ऑफ देयर मैकेनिकल थिंग्स। मतलब
There is no discussion from their strategy they're teaching us. Just a mechanical approach. It's like a robot. Why keep calling me, man? Is that urgent or something? I think I have to receive it. Just a second, I have to receive that call. Uh, हाँ, so कोई नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं था. आई डोंट थिंक ये डिस्कस करना ठीक है अबाउट सैलरी, अबाउट इनकम एंड एवरीथिंग. नज़र जैसी भी कोई चीज़ होती है ना, मेरी सोशल मीडिया है, नॉट नेवर आई विल डिस्क्लोज एवरीथिंग. कुछ चीज़ों को भी रखना पड़ता है. नेवर. और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, नेवर टेल एनीबॉडी हाउ मच यू आर अर्निंग. जस्ट शो देम योर लाइफस्टाइल. दैट्स इज इनफ. बट नेवर टेल देम योर होल इनकम और इवन समटाइम अ सोर्स एज वेल. बट ये सोशल मीडिया की दुनिया है, सो कुछ चीज़ों में खैर रहना चाहिए. आई डोंट थिंक इट विल गो एनीवेयर. जस्ट रेंज, आई मीन टिल अप 6 p.m. मैं भी लाइव चैनल शुरू कर क्या कर लेता, बट मेरा अप डाउन लगा रहता है एंड इन पीजी नो वाईफाई. ओके ओके. मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ मत करो अभी, मत करो ये सब चीज़ें. ये बाद में कर सकते हो. पहले आप क्लियर कर लो वो चीज़ को. अभी स्ट्रैटेजी को ध्यान दो. स्ट्रैटेजी पे मास्टरी कर लो. बैकअप में डाटा अच्छा खासा अवेलेबल कर लो. देन यार, बोला ना, स्काई इज द लिमिट. उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हो यार. जब खुद की ओपीडी, खुद का कुछ रहेगा तो कोई रोकने वाला थोड़ी होगा. ओके 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 ओके. लैग बहुत हो रहा है क्या? मुझे प्लीज़, एनीबडी, अगर मेरी आवाज़ या फिर लैगिंग में कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ टेल मी. बिकॉज ऑन माई सेकेंड स्क्रीन आई एम कीप लुकिंग एट इट. It's looking like it's lagging behind. So just tell me anything you guys have seen. ओके मेरे बच्चे. अरे गेमिंग है, कौन सा गेम है? बैटल बैटल रॉयल. हाँ यार. सोशल मीडिया में पैसे बहुत हैं, बस उसमें फेमस होना पड़ेगा. यस ऑफ कोर्स. वो फेमस कैसे हो गया? आई नो सोशल मीडिया में बहुत है पैसा. कॉल ऑफ ड्यूटी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छा गेम, बहुत अच्छा गेम है. कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, क्योंकि पीएस में भी है, पीसी में भी है. एनीथिंग. अरे बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हम भी प्रमोट कर देंगे. बना लो. कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को प्रमोट करने या किसी को कुछ करना. अपने अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं. बनाओ चैनल, हम ही प्रमोट कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है. आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया में हो तो बैटल रॉयल खेलना चाहिए. आई मीन द पबजी, दैट वो ज़्यादा फेमस है, नॉट कॉल ऑफ ड्यूटी आई गेस. मैं फ्री फायर खेलता हूँ. अच्छा, फ्री फायर. रात में पबजी बैटल रॉयल के लिए आ जाओ यार, गेम खेलते हैं रात में.
मैं एवरी डे मैं अपने बेटे के साथ एटलीस्ट 4 गेम तो खेलता हूँ नाइट में, बिकॉज वो ज़रूरी है। हम जिस लाइफस्टाइल से बड़े हैं वो पेरेंट्स के साथ वैसा बॉन्डिंग होता नहीं है, तो बच्चों का बॉन्डिंग करने के लिए क्या करना है। सो बेटर है कि वो गेमिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक चीज़ हो सकती है जिससे हम बॉन्ड कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग आई यूज टू प्ले एटलीस्ट 4 or 3 गेम विद हिम। हाँ हाँ, बात टाइम की तो है। यस 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 यार, अभी मेडिकल करियर एंड एवरीथिंग। अरे सॉरी, तुम कॉल ऑफ ड्यूटी, अच्छा तुम्हारा, तुम जो काम करते हो राइट, सी है, और आपकी सोच बहुत बहुत अच्छी है। थैंक्स। बट यही सोच क्या, मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से पला हूँ फिर उस हिसाब से मैं सोचता हूँ अपने बच्चे को थोड़ा सा तो कर पाऊँ, क्योंकि आई डोंट फाइंड, मैं अगर मैं अपने दिल की बात बोलूँ तो आई डोंट find any attachment or any kind of bonding with my father. So I just want this uh, missing feeling inside me. I have to give it back to my son. So that's why I do that. अभी रिसेंट में अगर आपने मेरा 24 आवर चार्ट वो जो लाइव था, शायद मैं भी फिर से लाइव चला जाऊंगा, क्योंकि वो टैब में लाइव होता है, तो उसी टैब के अंदर वो गेम खेलता है। तो एवरी डे लास्ट 2 डेज से मैं मेरे जो अपलोड्स वीडियो हुए हैं लाइव में, रात के जो गेम्स होते हैं वो मेरा बेटा उसमें खेल रहा होता है, तो वो भी लाइव था। मैं उसको मिला सकता हूँ आपको, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं दिखाता हूँ। ये आएगा, इसको मैं बुलाता हूँ। कम कम आ गए, इधर आओ, एक सेकेंड। क्या दिखाना चाह रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आओ इधर आओ। आई डोंट थिंक ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा, एक सेकंड। देखो डैडी लाइव है अभी, हाय करो सबको, हाय ऑल ऑफ यू बोलो, करो। हाँ बेटा, हाय करो, हाय करो। जाओ जाओ। हेलो कर रहे हैं तुमको सब, हेलो। यस, जाओ जाओ। हाँ हाँ, अभी सिर्फ वो 4 साल का है, बहुत छोटा है। आई मीन 4 इयर्स तो अभी जस्ट उसका यही मंथ में हुआ है। रिसेंटली बर्थडे भी सेलिब्रेट किए थे। आई मीन मैं देखो, गेमिंग ऐसी चीज़ है ना, मैं इसे इंकरेज ही करता हूँ। मतलब वो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना हमारे, उसको इवॉल्व करता है। मेडिकली भी अगर हम लोग उसे पता करें तो भी वो परफेक्टली सूट करता है। और रिसेंटली आई मीन आई हैव लिसन द पॉडकास्ट ऑफ इलॉन मस्क। ही इज ऑल्सो इंकरेजिंग पीपल्स टू गेम, टू डू गेमिंग, एटलीस्ट वो गेमिंग जिसमें ना कंटिन्यूसली हैव टू थिंक समथिंग, मतलब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे देखना है। तो आई फाइंड बैटल रॉयल एंड सम काइंड ऑफ puzzle game is good for him, but it should be in a limited time. It should be on a just a limited time, because वो important है। अगर वो आप नहीं देख पाओगे तो it will be difficult. So that's why I just do that। मतलब वो एक रूटीन बन गया फॉर हिम, that before sleeping मतलब उसको पता है कि डैड आएंगे, then we both play together। sometime my small brother, I mean जो जिसका मैंने डिस्कॉर्ड में डाला है, बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं वो, ही ऑल्सो प्ले विथ मी। सो ऐसा होता रहता है। अच्छा टाइम।
Now the fractal break has occurred, but I will not take the look for the entry at all because of the news. So just waiting is the game. Patience is the game. Okay. Fractal break, fractal break has happened. Just to see that, just to confirm it, and yet it did that. It happened. So uh, this is the POI that if there is no news, I might look to take entry from here. But we had news, so I will not take that. Just to wait patiently. After 6:15, there is a news on 6 p.m. So 15 minutes के बाद I have taken an entry. Otherwise, I will not take that. High probability ये होगा. I feel that this kind of thing can happen. This is Asia high. There is a perfect what I call a perfect unmitigated POI, and if during the news it is, if it go up, break this one, and suddenly it's coming down, like within this candle only, if it's coming down, just take the entry. Just take the damn entry and put your stop loss above this high. That's it. Just above that hand, target this low. It will be a good trade because I have taken it myself most of the time, but it's a news trading, so avoid taking trade on your funded account because there is high chance that you can blow that account. एक एक चीज बताता हूँ, what you can do about it. See, suppose you have a personal account. See क्या होता है न्यूज़ में, if you new trade news, स्टॉप लॉस भी रिस्पेक्ट नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी रिस्पेक्ट नहीं होता है. इफ यू टेक अ स्टॉप लॉस अराउंड $100, you might lose 500 or $1,000 itself only. Yes, you put your stop loss there as well, but a spread occur, and what is called spread, and there's one thing, uh, uh, forget the name, कुछ बोलते हैं उसको, उसकी वजह से ना पूरा का पूरा स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है. तो व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम, suppose I have a $1,000 live account on XNS. I will withdraw $900 from there. If I am going to take $100 trade from news, most of I have just only look for news trading on when high impact news was coming, or everything is aligned with my strategy. Otherwise, I will not take that. Yes, slippage. Very good. Slippage. तो slippage की वजह से वो ऐसा हो जाता है, हाँ. तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई हैव मैक्स टू मैक्स आई हैव $1,000 अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई लाइफ, नॉट मोर देन दैट. सो और मैं लाइव अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में $100 से ज़्यादा का रिस्क लेता भी नहीं हूँ. और इफ़ आई एम गोइंग टू टेक $100, आई विल विदड्रॉ 900 एंड take $100 risk only if I'm doing news trading. Otherwise, I will not put it everything in my broker when I'm taking going for the news. So, but today I will not take that. I'm just giving you the advice because I don't find good scenario there. So that's why. कभी कभी होता है ना, गट फीलिंग आते हैं, हम उस टाइम पे हाँ यार लेते हैं. आई डोंट फाइंड इट बिकॉज internally it can go up till here as well. So अगर वो ऐसा कुछ होता है तो that means difficult for me to hold it, because ये sweep होने के बाद it can come down and just melt down, coming up and target this one because swing structure is still bullish. So इस वजह से भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोई टिप्स दे दीजिए. स्ट्रैटेजी नहीं बनानी होती स्ट्रैटेजी. देखो, एक अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाने को जाओगे तो यू एंड अप वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम. बिकॉज मेरा मानना ये है कि हर स्ट्रैटेजी काम करती है. स्टिक विथ वन स्ट्रैटेजी and master that one strategy. Collect the data, collect whatever, लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग करो. करो. अच्छा, हाँ वो सब सबसे ज़्यादा वही अच्छी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ. बट
Perfectly he's saying liquidity sweep, मार्केट स्ट्रक्चर. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो बट उसे आप, क्योंकि देखो, और हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर, कि हम लोग को स्टार्टिंग में ना ओनली स्टक विथ वन पेयर, कलेक्ट डाटा एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर. मतलब करना ही करना है, वो स्ट्रिक्ट रूल है, नॉट 6 मंथ, not more than 1 year. I'm talking about 1 year data is enough for you to be uh, yes, improve over time. वही बात है. तो उसी से रहो, फिर रोज वही चीज देखते रहोगे एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सेशन, यू जस्ट लुकिंग एट इट. फिर वो डाटा कलेक्ट होगा, फिर वो डाटा में आप देखोगे कि व्हेन यू आर टेकिंग लॉस, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग. तो उसको आप पॉलिश करते जाओ, देन यू बिकम अ मास्टर ऑन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड पर्टिकुलर प्लेयर. ये चीज़ है. बहुत सारी चीज़ें हैं, जर्नलिंग के लिए इस्तेमाल करो, नोशन डैशबोर्ड इस्तेमाल करो, कोई ऑटोमेटेड जर्नल इस्तेमाल करो, एक्सेल शीट इस्तेमाल करो, बहुत सारी चीज़. क्या ये सब चीज़ें ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, वरना ट्रेड मिस हो रहे हैं. मिस होंगे, ट्रेड मिस होंगे. ट्रेड मिस होने से आई डोंट थिंक कि आप उसे इतना वो, एवरी डे यू डोंट फाइंड अ ट्रेडर. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है. इस वजह से ही मैंने सेकंड पेयर को ऐड किया है, कि मैं एक ही पेयर के ऊपर ज़बरदस्ती में ट्रेड नहीं लेना चाहता. तो जो गलती से किया है ना, उसको गलती की जगह पे लिख के रखना, उसको सही जगह पे नहीं लिखना. एक ऐसा कॉलम बनाना, वैलिड ट्रेड और इनवैलिड ट्रेड. वैलिड ट्रेड को देखो कैसा है ना, अगर डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है तो सिंपल सी चीज़ ये है, लुक एट द चार्ट्स, डू ट्रेडिंग दैट डे, डू बैक टेस्टिंग, एंड फिर जब वो एंड ऑफ द सेशन होना, तो रात में जब भी व्हेन यू बिफोर गोइंग टू बेड, उसको पूरी तरह से देखो, दैट देखो कि क्या मिस किया आपने ड्यूरिंग लंदन सेशन से. जो मिस किया उसको इनवैलिड ट्रेड में रखो, जो आपने नहीं लिया या फिर ले सकते थे वो वैलिड ट्रेड में रखो जो आपकी स्ट्रैटेजी से था. फिर दोनों को कंपेयर करो, फिर इनवैलिड ट्रेड में कितना प्रॉफिट आपको बन सकता था, फिर क्या उसमें से क्या चीज़ अच्छी थी जो आप ले सकते थे, फिर उस तरह आप उसको अडॉप्ट करते हुए चले जाओ. आई वांटेड टू आस्क वन मोर थिंग. अच्छा अच्छा, कौन है ये नया है कोई? हाँ, अशरफ खान. Okay. If we are working on our strategy and they start making changes at some stage, then how much should we wait for? Okay, 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 okay. See, सबसे पहली चीज़ अशरफ, अ, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको. देखो क्या है, if you have a data that telling you that you have a consecutive loss of around 6 trade at a time, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये डे पे लॉस लेते हो या फिर कुछ और डे पे लॉस लेते हो. मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो पहले. अगर आपको पता है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिस पे आप काम कर रहे हो, और सडनली वो स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है कि आप, जैसे अभी मेरी स्ट्रैटेजी में मैं कंजिक्यूटिव लॉस 6 ले सकता हूँ. अगर मुझे उससे ज़्यादा के लॉस आ रहे हैं, हाँ, 6 से ज़्यादा हो गया, 10 लॉस आ गया बैक टू बैक, या फिर 8 लॉसेस आ गए हैं, तो दैट मीन्स समथिंग हैज चेंज. बिकॉज मार्केट इज एवर इवॉल्विंग, वो बदल रही है, बदलती जा रही है. नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, नए इम्प्लीमेंटेशन आ रहे हैं, नए बॉट्स आ रहे हैं. आजकल एआई का दौर है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बट कोर ऑफ द स्ट्रैटेजी सेम रहेगी. तो जब थोड़ी बहुत दिख रहा है कि आपके लॉसेस से ज़्यादा लॉसेस आ रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट समथिंग हैज़ चेंज, देन यू हैव टू फिगर इट आउट. बिकॉज वो अगर आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी आपको कोई भी सिखा देगा, मैं सिखा दूंगा, कोई भी सिखा देगा, बट अगर आप उसको देख कर बता नहीं सकते कि चेंजेस क्या हो रहा है, आपके पास डाटा नहीं है वो बैक करने को,
तो end of the year or somewhere down the line in the future you might take so many losses if you are not able to evolve yourself. तो ये एक चीज़ है, हम ह्यूमन इवॉल्व होते हैं ना, मतलब वो इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह ये भी चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो ये मेरा कहना है, आई होप यू अंडरस्टैंड अशरफ। हाँ, ये गलती वाली ट्रेड जो गलती से सही हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर देती है, यस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, यस, 100%। दैट्स वाई कलेक्टिंग the data is everything, my friend, everything. If you're not collecting it and just randomly trading each day, it will affect you so hard. और जो इन्होंने बोला ना, गलत ट्रेड साइकोलॉजी हिला देती है, बहुत गंदा हिलाती है। सो next 15 minute there is a news, so we will wait for next 15 minute. Let's see the candle of the news. I will not take the trade, but I will just wait, patiently wait and see how things could be and how things could be. बेस्ट है, स्लेयर बेस्ट है। ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, इट इज इनफ फॉर यू टू बी प्रॉफिटेबल, इट इज मोर देन इनफ, बट I would suggest add market structure with that. It will be more beneficial for you. Add only market structure. Understand market structure. What, which scenario are you are in? You are in internal or external or swings, wherever it is. You have to understand. And I mean, मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, बट वन टाइम फ्रेम इज़ ऑल्सो इनफ फॉर यू टू बी प्रॉफिटेबल, यू डोंट नीड एनी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ऑर्डर फ्लो समझना है, यस ऑफ कोर्स, ऑर्डर फ्लो, दैट इज इट, ऑर्डर फ्लो, हायर हाई हायर लो, दैट इज सिंपल। बट इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको समझना रहता है, बट चीज़ देखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड अशरफ। माफी पते हैं। चलेगा, हाँ, ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉबेबली इन एक्सपीरियंस हूँ, 2 ही महीने हुए, यस, दैट इज मेन थिंग ना, अंडरस्टैंड। 2 महीने में हाउ कैन यू, ओ आई थॉट यू आर लाइक ईयर और समथिंग। 2 महीना तो कुछ नहीं है यार, थिंग मैन, 2 मंथ इज लाइक व्हाट, नथिंग, 2 मंथ इज नथिंग, कुछ नहीं है 2 महीने। अभी एक्सपीरियंस से सब समझ जाएगा, ट्रस्ट में मार्केट स्ट्रक्चर। बस पूरा मैच पकड़ो, लगाओ 60-70 जोन पर, पेंडिंग लगाओ, सब जाओ। ऑर्डर लगाओ, सो जाओ। अरे 2 महीना, ठीक है, वो भी अच्छा है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो अभी बॉय ने बताया, इट्स योर बॉय, ठीक, आई गेस। हाँ, तो ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आई मीन हाई टाइम फ्रेम में। हाँ, चिल करो, बहुत लोग हैं यार, बहुत पैसा बना रहे हैं, 15-15 20-20 15-15 मिनट पे या फिर 1-1 आवर पे ट्रेड लगा के सो जाते हैं, चलता रहता है ट्रेड 2 दिन, कोई बात नहीं, पैसे बनते रहते हैं। 2 महीना तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, एटलीस्ट यू नीड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केट। 2 महीने में कुछ नहीं होता, 2 महीने में आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज टॉकिंग समबडी, आई वॉज मैसेजिंग समबडी, मैं भी ऐसे ही कुछ कर रहा था, मैं भी किसी, when I see someone getting a payout from particular funded, I was just like, you know, go to him and chat with him and talk about him. There is one person that
I will not take his name. What he advised me is that just stick to your strategy. Uस time पे I was like, what I am doing, is this correct, or is this a correct approach, or does I choose a right path? I was so confused. So he just tell me one thing. On funding pip in Discord group, I have found out that he's getting payouts, multiple payouts. So I just go and DM him and talk about him, and how I'm going to pass a prop form, and how I'm going to get funded, or getting some payouts, or what I'm doing wrong. So he just told me that delete social media first, delete who, do not think anybody except yourself, that you are only of your enemy. मतलब उसने सीधा सिंपल ये बताया था कि तुम ही खुद के एनिमी हो, उसको तुमको सही करना है। सोशल मीडिया सबका डिलीट कर दो, किसी को फॉलो मत करो, ओनली फॉलो दैट गाय हु इज टीचिंग यू, दैट्स इट, simple, he's telling me, simple, follow that guy only, and just trust yourself and stick to your plan. A simple thing that he told me. But after that, it is not like मैंने उसके बाद ही I just improve myself. I have taken so many bad things, but now when I'm in a position right now, then when I see his chats, I have see his on history, and he's telling me, now it's completely in my head. Yes यार, ये तो बहुत सही बोलता था बंदा. I'm a 9 month learning trading, last 8 hours a day back testing, seeing what market do, why it moves like this. Yes, हर चीज का रीजनिंग पता होना चाहिए. If you know the reasoning, that is hell of a good. Because uh, when I found out this strategy, I was like, why market is doing this, and why it's doing that? Why it's just respecting this support zone and respecting that demand zone, and sweeping this and that, and why market, when push up happen, why it just come back to the demand zone? Why it not go upside like directly? There is no reasoning. Because when I was learning medical career, अगर आप मेडिकल करियर में जैसे कि तुम भी हो, तो यू अंडरस्टैंड दैट हम लोग को हर चीज़ का रीजनिंग बताया जाता है कि ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है, राइट? तो उसके हिसाब से मैं रीजन ढूंढ रहा था, बट फॉर्चुनेटली, आई मीन, द ग्रेस ऑफ गॉड, आई फाउंड आउट दिस, एंड आई अंडरस्टूड everything what is saying, and reason behind it. So it's stuck in my head. That's why I just love SMC. Market structure is nothing but a good old support and resistance. Yes, of course, my friend, of course, 100% true. Mm, my watch is telling me now it's a time for you to do walk. You're sitting more than 1 hour, so मैं अपने वॉच को बोलना पड़ेगा कि 7 to 8 मिनट रुक जाओ, बिकॉज न्यूज़ है, उसके बाद देखते हैं. Yes, I'm not encouraging you guys to take a trade during the news, but I'm telling you that just wait patiently and see how price react, how news, what news came, उसके हिसाब से क्या हुआ, बिकॉज वो देखना ज़रूरी है. जस्ट अ सेकेंड, माउस इज नॉट वर्किंग. हाँ, मानिला फॉरेक्स फैक्ट्री, unemployment claim, 6 minutes left. Forecast is 224K, and previously was 220K. So now it is less than the forecast. There is a high chance that USD will drop next few days, and you will can go up. But if the market forecast, according, if the actual report come according to forecast or more than that, that is good for the currency. So maybe you can dump. We just have to wait. उसके हिसाब से we can go for the next week. Okay, so less than 5 minutes for the news come. So we're just waiting. 25 people are still, I mean, my 1000 subscriber is about to come, so giveaway है. So hope
देखते हैं, नेक्स्ट 25 सब्सक्राइबर विल कम, उसके बाद गिव अवे रखेंगे। ओके, हमारा नहीं ना, करते हैं। ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसा जस्ट लाइव में आते हैं, क्लिक करते हैं चले जाते हैं, क्लिक करते हैं चले जाते हैं, वाई वाई डू दैट? मतलब आए हो तो यार पूरी तरह से देखो। आई I मीन अगर कुछ लोगों कुछ लोग आते होंगे, देखते हैं अरे हिंदी में बोल रहा है यार, अंग्रेज लोग होते हैं तो वो भी चले जाते होंगे। I find out so many views but not getting watch hours because people not stick like you guys stick with me. Less than 4 minutes for the news, so we just wait. What can what could happen? I just don't know about it. Let's go to GBP JPY, see how this pair is evolving. It's not coming to the POI, I guess, so we just have to wait. There is imbalance inside this as well, so we'll see, we'll see, we'll see, we'll see, we'll see. क्या लिखा है? अभी एक साल तो टेक्निकल क्या लिखा है? अभी एक साल स्ट्रैटेजी का तो 2% क्लियर भाई, फिर आएगा साइकोलॉजी इशू 98%। अरे यार तुम कितने साल से कर रहे हो यार? मतलब यू आर लाइक पिन पॉइंट, यू आर ऑन द पिन पॉइंट मैन, यू आर परफेक्टली पिन पॉइंट। मतलब एकदम परफेक्टली बात बोले हो। कितने साल से तुम कर रहे हो? बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। सब सीखने के बाद आती है साइकोलॉजी। इट इज ऑल अबाउट 98% perfectly. I'm still, sometimes I'm still bad with my psychology. I'm still sometimes could not control my psychology as well. So ऐसा है। Yes, it's perfectly saying right. सब लोग कहते हैं। अभी मत, अभी सिर्फ देखो सुनो स्लेयर, लिसन, यू आर जस्ट इन अ 2 मंथ ऑफ द, 2 ही महीना हुआ है राइट? तो यू जस्ट लर्न योर स्ट्रैटेजी, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन योर स्ट्रैटेजी। 24/7 आपके हेड में, रात में सोने में, उठने में, इवन क्या बोलूँ मैं, वॉशरूम में आपको सिर्फ चार्ट्स दिखनी चाहिए। आप अभी लर्न योर स्ट्रैटेजी फर्स्ट, देन जब वो स्ट्रैटेजी आप मास्टर कर लोगे, देन यू पुट इट योर पर्सनल कैपिटल एंड वॉट एवर इट विल बी, then the real thing is coming. It's called psychology. So it will come, mindset will come, it will haunt you at night as well, because ये ऐसा होता है। ये भाई गिव अवे बता दो, रोजा खोलने जाना है, मैं तो सिर्फ अभी गिव अवे नहीं है। गिव अवे इज नॉट नाउ। व्हेन आई कंप्लीट माय 1000 सब्सक्राइबर देन आई विल डू दैट। जाओ आप रोज़ा खोल लो, अभी रोज़ा खोलने का टाइम है, पहले असर की नमाज़ पढ़ो उसके बाद, बट अभी नहीं। मैं 4 महीने से साइकोलॉजी इशू में फेस फंसा हूँ। हाँ, उससे पहले आप कितने टाइम से स्ट्रैटेजी करो वो बताओ। ये दिखता है सर में दर्द होने लगता है सोच सोच के, फिर जिम करता हूँ। अरे क्या बात है। अभी स्लेयर भाई डेमो अकाउंट रिफिल करते हो रहो बस, अगले साल आप मेरी जगह पर होंगे। यस ऑफ कोर्स, उसके अगले साल मेरी जगह पे 100%। सर में दर्द तो होगा यार, स्ट्रैटेजी सीखो, 24 आवर करके सीखो, बस सीखो। ओहो न्यूज़ है यार, अभी 30 सेकेंड्स है। व्हाट आई एम डूइंग यार, मतलब मैं भूल गया तुम लोग के चैट्स के चक्कर में। यस, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। लेट्स प्रिडिक्ट व्हाट कैन हैपन। आई एम थिंकिंग दैट इट विल गो अप। आई एम थिंकिंग इट कैन गो अप। बोलने में क्या जाता है, लेना तो है नहीं ट्रेड, ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम थिंकिंग, बट लेट्स सी। 14 सेकेंड्स टोटल टाइम में ट्रेडिंग, 11 मंथ्स। ओके, इट इज़ गुड। एटलीस्ट 1 ईयर हो गया है ना, नो प्रॉब्लम।
डेमो और बैक टेस्ट यही करता रहता हूँ और डेफिनेटली सेल्फ डाउट करते रहो। स्ट्रैटेजी हॉपिंग मत करना, बस एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना। सेल, यू थिंकिंग अबाउट सेल, लेट्स 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 व्हाट हैपेंड, इट्स नॉट दैट कुछ नहीं हुआ है। हमारा पोपट हो गया, नथिंग हैपन। न्यूज़ आई कि नहीं यार? पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, थोड़ा सा लेस है। कुछ नहीं हुआ है, पोपट हो गया। आई स्टिल गॉट माई फर्स्ट स्क्रीनशॉट, मेरे पास भी है, सबके पास है, वो होना चाहिए। when we are look back to our कुछ नहीं हुआ, nothing happened। स्ट्रैटेजी मतलब कुछ हुआ ही नहीं यार, इतने फोकट में डरे हुए थे हम। हाँ मेरे पास भी है स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे। पोपट हो गया, पोपट पोपट। यस। आई थिंक, सी, आई नेवर follow FOM rather than FOMC और CPI और समथिंग, उसमें ज़्यादा मूवमेंट होते हैं। कौन सा न्यूज़ था यार? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्लेम, नॉट रेट, इट्स अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। यस। हाँ जिला, भाई बुबू, आता हूँ रुक। कल NFP होगा? नो, NFP कल है? NFP नहीं है यार, NFP तो ऑलवेज फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द वीक होता है। कल देर इज नो न्यूज। NFP ऑलवेज फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द वीक, मतलब फर्स्ट मंथ फर्स्ट वीक के फ्राइडे में आता है NFP। वो बहुत ही हाई इम्पैक्ट होता है, उस पर करने में मज़ा आएगा, ये फिर मज़ा आता है। ये तो कुछ खास नहीं था एंड नॉट दैट गुड। तो चलो फिर, आई थिंक हैव टू क्लोज द सेशन नाउ। ओके, मैं सोचा हर फ्राइडे, नो नो हर फ्राइडे नहीं, हर मंथ की फर्स्ट फ्राइडे में। चलो, आई थिंक हैव टू क्लोज द सेशन नाउ। और ये क्या लिखा आपने? एक साल में एक क्या लिखा? एक साल स्ट्रक्चर सब समझ में आ जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर, टॉप डाउन एनालिसिस, वन वन मिनट मार्केट स्ट्रक्चर, FPG ब्रेकर, ब्लॉक एंड मिटिगेटेड, ये सब पढ़ लो। सही बोला, सही बोला। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, स्टार्टिंग में हम बहुत सोचते हैं कि 1 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड लें, बट धीरे धीरे व्हेन वी आर इवॉल्विंग, व्हेन वी आर एक्सपीरियंस इन द मार्केट, वी ट्राई टू शिफ्ट टू द हाई टाइम फ्रेम। स्टार्टिंग में ठीक है, फॉर द लर्निंग पर्पस यू कैन गो टिल अप 1 मिनट और इवन अ सेकेंड, but when you are experienced enough in the market and you have you know become a profitable, then you are avoid taking trade on one month. So and it's my suggestion, you can do that। बस एक्सपीरियंस चाहिए लिक्विडिटी के लिए। यस, अपने आप को लिक्विडिटी नहीं बनना है, लिक्विडिटी के साथ अपने को ट्रेड लेना है। लिक्विडिटी इज नथिंग ब्रो, कम कम इन डिस्कोड, आई टेल यू। हाँ डिस्कोड में जाओ, बात करो, डिस्कस इन द डिस्कोड, दैट इज गुड for my community. Thanks. If you guys doing that, it is okay. You can discuss, and I will try and put it some of my words as well if I see that। अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो I will do that। मैं वो सब गलती नहीं करना चाहता जो हर कोई करता है, जैसे कि ओवर ट्रेड, इमोशनल ट्रेड, ताकि जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊं। ऐसा नहीं है, वो बाद में, स्ट्रैटेजी के बाद में यू विल गेट इट। continuity camera phone has 20% battery remaining, so I have to shut it down और leverage वगैरह। वो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी, हर स्ट्रैटेजी में लॉसेस होते हैं, वो अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, देन यू बिकम प्रॉफिटेबल। बाय बाय, अरे लव यू, लव यू ब्रो, लव यू। बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, I really appreciate that, thank you। Bye, we'll meet I guess tomorrow, end of the week, we'll meet tomorrow, okay?
यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग, कंटिन्यू डिस्कस इन द डिस्कॉर्ड एज वेल। मैं भी कुछ रहेगा तो इनपुट देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलो, बाय। बाय स्लेयर, बाय। बाय बॉय, बाय अशरफ, बाय। हाँ, इज ऑल्सो ज्वाइनिंग।